जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी साढ़े भैन भ्रा तकने ले जी, संगीत दोस्त तकने ले जी, बुजुर्ग तकने ले जी, बच्चे तकने ले जी और जिस कंट्री च तकने ले जी, देसी चैनल ब्रैडफोर्ड दी तरफों तुसेंगी बहुत बहुत सलाम वालेकुम जी। एक प्यार ना, एक मोहब्बत ना और एक सपोर्ट ना। मकबूजा कश्मीर सुकिनी, जम्मू कश्मीर सुकिनी, पाकिस्तान सुकिनी, पठान साढ़े भैन भ्रा, यूके, आल वर्ल्ड जिस कंट्री साढ़े भैन भ्रा तकने सपोर्ट करने तुसानी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाहर मौसम ठीक है जी, ना इतनी सर्दी है तो ना इतनी गर्मी है। कदा धुप्प अच्छनी तो कदा वापस चली जानी। तो अज जी अस जाई रहे हैं इतना बाकरन रोड BD3 कार्मल सेंटर च साढ़े बड़े प्यारे भाईए MP इमरान हुसैन। तो उन्होंने जेडे भाई वकील है उन्होंने नाम सी अल्ताफ अमजद वकील है, बहुत बड़े सोलिसिटर है। उन्हें असें बुलाया वा जी, स्पैशल उन्हें दावत असें अज दी। तो उन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो अज जी गल्लां करसन कश्मीर ने बारे च, फलस्तीन ने बारे च, गाजे ने बारे च और उन्हें अस ये भी मसैल रखसां जेडे यूके च भैन भ्रा पर काफ़ी परेशान है। जेडे अजकल तुसें पता है जेडे वीज़िया ने बारे च काफ़ी रौला है, उन्होंने बारे च भी गल करसां और उसने सुनला है जेडे भैन भ्रा साढ़े परेशान है महंग भाई नी वजह सो सारा कुछ इंशाल्लाह दसां जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी हमारी प्यारियां पेना, प्यारे भरा, प्यारे बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, सारे की हमारी तरफ, हमारी पूरी फैमिली तरफों बहुत बहुत सलाम अलैकुम और बहुत बहुत दिलो शुक्रिया अदा करने, इतना प्यार ना, इतना सपोर्ट ना, सारे देसी चैनल ब्रैडफोर्ड की सब्सक्राइब करने ना, लाइक करने ना, शेयर करने ना, कमेंट्स करने ना, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सारे खुश रखे है, अल्लाह पाक सारे आबाद रखे, अल्लाह पाक सन चोली हमेशा खुशियां ना भरिया रहन, सन घर हमेशा रिस्क ना भरिया रहे। और जितने सारी बच्चियां बच्चे अल्लाह पाक उन्हें बहुत सारी कामयाबियां दे, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्स ईमान च रखे, आमीन। तो अज असां जासा इंशाल्लाह कॉमन कम्युनिटी सेंटर बाकन रोड पर BD3 उतना सारे भरा इमरान हुसैन MP है माशाल्लाह, और भाई उन्होंने जो अल्ताफ अमजद माशाल्लाह बहुत बड़े सोलिसिटर है माशाल्लाह। तो उन्हें अज मेरे हस्बैंड इन्हें की दावत दी जी अज इतना अच्छा है। तो जी स्पीच करसूँ जी गल्लां बासूँ माशाल्लाह कि भाई इमरान हुसैन बहुत ज्यादा सपोर्ट करने, कश्मीर नी, पालस्तीन नी, गाजा नी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करने माशाल्लाह जी। और सारी एक पनई सी यास्मीन बेगम पूछने से जे भाई इमरान हुसैन केरी पार्टी नाले हमारी पेन पहलू से लेबर नाल, लेकिन इना इस्तीफा चाहिए दिता, रिजाइन करस्टा, रिजाइन लेबर की छोड़ी दिता ने, इना लेबर की छोड़ दिता, रिजाइन करस्टा, क्योंकि इना हम मैं फलस्तीन सपोर्ट करसा, गाजा सपोर्ट करसा, कश्मीर सपोर्ट करसा, मैं लेबर की छोड़ू ना, छोड़ी दिता ने खत्म। सिर्फ और सिर्फ सारे भाई इमरान हुसैन की आवाज सारा जानी, सारा अपनी आवाज पहुंचाने चाहने के मैं कश्मीर नाला, मैं पालस्तीन नाला और मैं गाजा नाला जी। तो आज नी वीडियो यही सीख सब पैना भरा जरूर तक है और उनकी जरूर सपोर्ट करे माशाल्लाह, ताकि वो ज्यादा पालस्तीनी, गाजानी और कश्मीरी सपोर्ट करो ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यकीन करो बीमार तो मैं काफी देर हो गई, लेकिन आज ही हमारी सेहत नहीं ठीक, मैं स्टिल दर्द आ। तो यह तो कोई दर्द नहीं, गोलियां भी जरा ना मैं हर वेला खाना ही रहना, या तो कोई गोलियां जड़ियां जी ऐ तक की सकनी है तुसा के ऐसा नहीं दसना कि सेल्फी पर आनो, लेकिन कोडीन टैबलेट्स हैं बिल्कुल यकीन करो खाई खाई ना तो मेरी पेटा की जन काफी दर्द और होना जाना पे कोडीन टैबलेट्स बिल्कुल। भाई इमरान उन्होंने ये भी गल करसा सा अस्पतालों ने बारे बहुत प्रॉब्लम होनी, डॉक्टर ने बारे बहुत प्रॉब्लम होनी, ये भी सॉर्ट आउट करो। बल्कि तुसा क्या हनी जरूरत नहीं पनी, खुद आपो सारी गल्ला कर सुन, क्योंकि इस सब वास्ते जिरन आज इतने बड़ी उन्हें जग हेल्ड कीती ताकि अपनी आवाज सारे भैन भरा की पहुंचा सुन आज इंशाल्लाह। भैन भरा जरूर उन्हें सपोर्ट करे और वीडियो पूरी तक आए, उन्होंने सारी स्पीच तुसा जरूर सुने इंशाल्लाह। बिल्कुल जी बिल्कुल। हुन इलेक्शन आई रहे तो भाई इमरान और इलेक्शन खलसन जितने भी ब्रैडफोर्ड ने बंदे हैं जी, ए इलेक्शन दूसरे गवर्नमेंट ने, अच्छा जी ए महला गवर्नमेंट ने सुन दूसरे इलेक्शन में गया अब मैं सही श्योर ना, लेकिन आने से असन की जरूर सपोर्ट करें। इलेक्शन ने मरी उन्हें बुलाया, अच्छा जे सपोर्ट उन्हें जरूर करें इंशाल्लाह। सन पूरी जितने भी ब्रैडफोर्ड ने बंदे प्लीज उन्हें सपोर्ट जरूर करें जी जरूर।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई गया जी बाकर रोड BD3 कारमल सेंटर सामने बंदे इकट्ठे हुए हुए तको जो इस साइड पर तो बंदे माशाल्लाह काफ़ी इकट्ठे जो बुने जी क्यों ले भी गड्डियों ने तको तो हूँ जुलने अस अंदर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हूँ अस आई गया जी कारमल सेंटर जितना जो नाम भाई इमरान को तकलीफ करने पे स्पैशल उन्होंने भाई जेडे अमजद इमरान ने भाई अमजद इन्होंने गलबात करने और अगर और भी गलबात दसने थोड़ी घेरा थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बहुत मेहरबानी कौन सा क्या वीडियो बनी हो इसी चैनल पर अच्छा टिकटॉक करने ना मैं सबसे बड़ा टिकटॉकर ब्रैफर्ड चलो सपोर्ट करें स्पॉट तो साने किया ना करने के देसी चैनल पर on YouTube you know yeah like माशाल्लाह जी भाई इमरान ने फंक्शन भी चसाए ने बहुत ज़्यादा बंदे थे आए हुए तकरीबन बड़ी ज़्यादा दुनिया जितने काम किए जितनी भी पब्लिक है कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना ये बिल्कुल स्टेट पे सॉर्ट आउट करने फलस्तीन वास्ते गाज़ा कश्मीर सारे वास्ते आवाज़ ना उठाई थैंक यू वेरी मच माशाल्लाह बरकत दुआवा ना बस तान नतीजा है आसामी सपोर्ट बहुत करने हैं फलस्तीन गाज़ा कश्मीर हर वेला में यही पाना कहले भाई हम और तो क्या पाने चाहते हो बस इतना सारे Alhamdulillah, Imran has helped me a lot and he's helped all the community a lot as well. And we're here to support Imran, the voice of Bradford. as you can see there's a lot of people here today. They've all come for Imran and mashallah obviously he helps Bradford out a lot. He's been helping Palestine out and he's been helping people around the world. आदम नाल होने में कई बारी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है साहब ठीक है ठीक है ना ठीक है Imran Hussain, the loudest voice of Palestine. Now, as a proud British Muslim myself, I want to be clear. Islam is a religion of peace, love and charity. And for many, it is also not just our religion, but our identity which we are deeply proud of. Palestine is and why will they not immediately recognise the state of Palestine? And what message is this government sending to Palestinians who have now been stripped of their dignity in life and death? Imran Hussain, the loudest voice on Palestine. I have a very simple question for the Foreign Secretary. Just what will it take? How many thousands of innocent Palestinians must be slaughtered before this government condemns this brutality and bloodshed? Imran Hussain, the loudest voice on Kashmir. Trains that don't run on time, buses that don't turn up, police officers that can't attend crimes, social security that provides very little security. The people will pay them with interest in the ballot box. Imran Hussain, the loudest voice on Palestine. Now, as a proud British Muslim myself, I want to be clear. Islam is a religion of peace, love and charity. And for many, it is also not just our religion, but our identity which we are deeply proud of. Palestine की सबसे ऊंची आवाज Imran Hussain. What is this government waiting for? And why will they not immediately recognise the state of Palestine? And what message is
is this government sending to Palestinians who have now been stripped of their dignity in life and death? Imran. What is this government waiting for? And why would they not immediately recognize the state of Palestine? And what message is this government? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to, for those of you who don't know me, my name is Gazanfar Khalid. I am the chair of the Bradford East Constituency Party. It is my great pleasure to welcome you to the launch of Imran Hussain MP's campaign for 4th of July election. It's not going to be a long speeches. It'll be very, very short speeches. We have 3 speakers who will be speaking to you today. My job is only to introduce those speakers. First of all, I would like to invite Maulana Hafiz Azhar Sahab to come and recite the Holy Quran. Maulana Azhar Sahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا. Bradford. Is it okay to like Leeds? Yes. So for all of you, I hope that Leeds is your second favourite place, but your favourite place has to be Bradford. And it's fantastic to see the leader of Bradford Labour Council here as well, who's done such a good job in the face of 14 years of Conservative cuts. The reason I'm here today is because I'm proud to support the election launch event today of Imran Hussain. I'm proud to call him a friend, I'm proud to call him a comrade, I'm proud to work alongside him in Parliament. And what I'd say about this is that people get put to the test when they get put into Parliament. It's easy to talk big before you get into Parliament, but the real test is when you're in Parliament. As they say, the proof of the pudding is in the eating. And every test in Parliament, Imran Hussain has passed with flying colours. Whether he's speaking up on local issues, on national issues, on international issues, one thing you can guarantee is that Imran Hussain is never scared to tell the truth to power. And I know that constituents in Bradford, just as constituents in Leeds were, in my constituency, were full of admiration for Imran when he did the right thing and voted for a ceasefire, voted to end the slaughter in Gaza. But whether it's Kashmir, Palestine, your public services, the NHS, the cost of living crisis, Imran has always been there, speaking up in Parliament and active in his community. Now, there is only one Imran Hussain, but I think Parliament would be even better if there were more Imran Hussains in Parliament. So if anybody can work out how to clone Imran Hussain, please let us know. Because Imran, they say he's got a loud voice, and I've got a loud voice too, but Imran really is the voice of his constituents, the voice against injustice, a voice that literally and metaphorically is heard loudly in Parliament and beyond. And that's to vote for Imran Hussain in Bradford East and persuade and encourage your friends and family to vote for Imran, not on the basis of the false promises that others make when they're standing against people like Imran, but on the basis of his track record, a strong track record on local issues, a strong track record on
national issues, a strong track record on international issues. And when you vote for Imran in Bradford East, you'll be doing two things. One, you'll be sending him back to Parliament to be a strong voice again on all of those issues, local, national and international. But you'll also be sending a strong message from Bradford East. Session, and I had my raincoat ready, and it has been one of those elections. So I just want to thank you all for being here. I want to thank Imran for inviting me. And you know, it's an election campaign. I got elected with a 401 majority last time. So when Imran rang and said, "Can you come to Bradford to support me?" I was like, absolutely. And that's why I'm here, because it's so important to support this campaign. When I first got elected back in 2019, when I entered Parliament and the Tories had an 80-seat majority, it was quite a strange, scary experience, and there weren't that many friendly faces in Parliament, as you can imagine. But there were some, like Imran's, like Richard, that made Parliament easier, helped me settle in. So I want to thank them for doing that, and for the Socialist Campaign Group for being there as well. And with Imran, it's not just occasionally opening fast with Imran during Ramadan or sharing a curry, of which he owes me one, and now there's many people here to remind him of that. He got me an omelette last time with salmon, and I don't think that cuts it. So Imran, I haven't forgotten that you do indeed owe me a curry. He is one of the other MPs that also understands the struggle of being a Muslim MP, and there simply isn't halal food on the estate. So we share all of those things in common, but mainly political support and solid position. He's been one of those voices unafraid to name Israel's actions for what they are. They are war crimes, and that's what every single member of Parliament should be calling them. And with Richard, he's taken evidence of those crimes gathered in meetings in Parliament, consisting of expert witnesses, to the International Criminal Court in The Hague. So thank you to Imran and Richard for that work. And Rahim. Friends, brothers, sisters, elders, Assalamu alaikum and good afternoon. I'm very grateful to Gazanfar Khalik for hosting this event today. And can I firstly thank my two colleagues who stand to my left and to my right. Actually, probably both stand to my left. And I want to thank them. Richard Bergen and Zara Sultana are two of the most principled, most effective, most outspoken against injustice voices that those corridors of power have ever seen. Please give them a Bradford welcome. Secondly, my absolute thanks goes to each and every one of you here today. I decided yesterday to launch my election campaign, and alhamdulillah, in a period of 24 hours, hundreds of you have come out to support me, and I'm grateful to you for that. And the reason hundreds have come out on one call is this: Imran Hussain is part of the people of Bradford, and the people of Bradford are part of Imran Hussain. And I again today come to you with no empty promises. I come to you again with a proven track record of delivery. I've worked tirelessly. मैंने मिट्टी से मिट्टी होकर पिछले 9 साल में आपका I have worked as a humble servant of the people, because that is what I am. And whether
not permitting today. But whether that was the blocking of the backdoor privatization of the NHS, it was Imran Hussain who led on that. And we stopped that. Whether that was, even though we are in opposition, bringing in millions for the cricket dome in Canterbury or the sports facility in Myra Shea, that was Imran Hussain. Or whether it was pioneering the non-invasive post-mortem facility, the only publicly owned, free use, non-invasive post-mortem facility in Bradford. This is a journey Imran Hussain started over a decade ago. Or whether that's extending burial plots. A lot of this work I never advertise. मैंने कभी advertise नहीं किया है. लेकिन dignity in death is something that is one of the most important things for me. और मेरा वादा है ना सिर्फ ब्रैडफोर्ड के अवाम के लिए, आप मुझे दोबारा इंशाल्लाह मेरी आवाज भेजेंगे, पूरे मुल्क में हम नॉन इन्वेसिव पोस्टमार्टम की फैसिलिटी But above all, I'm proud that I have के MP को मिलने के लिए I was deputy leader of the council. To see an MP, it used to take me 3 to 4 days. आज आप बताएं, कभी मैंने किसी को दफ्तर का नंबर भी दिया है? कभी आप बताएं, जब इमरान हुसैन को आप फोन करते हैं, इमरान हुसैन खुद आपको फोन करता है, इमरान हुसैन आपकी कॉल रिटर्न करता है, इमरान हुसैन के दफ्तर के दरवाजे खुले हुए हैं. Always, because I am a humble servant of my people, and I will always be, because this ये हमारी बुनियादी ड्यूटीज में है. So I ask you again, I ask the people of Bradford, judge me on my record of delivery. And I ask all the other candidates in this race, please present your record of delivery to the people of Bradford. आप भी अपना present करें, जमहूरियत है. My brothers and sisters, I have also been my entire life an outspoken voice against injustice. जहां भी injustice हुई है, I have always raised my voice. Be that the ethnic cleansing of the Rohingya, the persecution of the Kashmiris, or the war crimes currently being committed by the Israeli government against the Palestinians, Imran Hussain has never been silent. Wow! MashaAllah, MashaAllah. And I will continue. We now have a situation in Palestine, over 36,000 people killed, 2 million people forcibly displaced, starvation used as a method of warfare, the total siege of Gaza. Friends, as we stand here, over 1 million people sit in Rafah, the largest refugee camp in the world, facing famine, starvation, and facing the uncertainty of their own lives and the lives of their children. So we say to the international community and our own government, we support the ICJ in its ruling of there is a case to answer for genocide. We support the ICC in its case that there is a case to answer for war crimes, and the international community must support that. And that's why Richard Bergen,
myself and Zara and many other colleagues recently when the ICC and anybody committing war crimes is not immune. It's why Richard Bergen and me and Zara and many other colleagues, over 70 MPs from many different parties joined us to have an evidence gathering session in Parliament to gather evidence of Israeli war crimes in Gaza that we delivered to The Hague, to the Chief Prosecutor's office, that will now make part of the evidence, ongoing evidence. And I say this, the international community must understand this. Nobody is immune. And the reality remains that the double standards that we are seeing must stop. And we send a message from here. The life of an Afghani child, of a Rohingya child, of a Palestinian child, of an Israeli child, of a Ukrainian child are all the same, and they must be afforded the same protection under international law. For the right to the Palestinians to have immediate recognition and their home state, I started by saying this: Westminster or the political system didn't send Imran Hussain to Bradford. The people of Bradford sent Imran Hussain to Westminster, and they expect me to be stand up and counted against injustice. And I will never ever fail you on that duty. And when that means taking tough calls, I will take those tough calls. When I first entered Parliament, I remember the cruel welfare bill. Zara wasn't in Parliament at that time. I remember the cruel welfare bill. And even though the leadership at that time of my own party was to support that, Richard Bergen and I did not support that because it would have brought poverty to the streets of Bradford. Most recently, when I disagreed with the leadership of my own party on Palestine, I was the first person to stand up and resign from the front bench and move away from the opposition to advocate for a ceasefire. झुकाने से नहीं डरता है। मैं सिर्फ अपने अल्लाह के सामने अपना सर झुकाता हूं, दुनिया की किसी ताकत के सामने अपना सर नहीं झुकाता हूं। और अपने असूलों पर, अपने ज़मीर पर कभी भी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। फ्रेंड्स, वो वक्त गुजर गया है मेरे भाइयों, वो वक्त गुजर गया है जब हमारे बुजुर्ग यहां आए थे, उनको सिस्टम का पता नहीं था, उनके वो राइट्स नहीं थे। आज हम पार्लियामेंट पे खड़े होकर इमरान हुसैन झुककर बात नहीं करता, आंख में आंख डालकर बात करता है। वो करता रहेगा, जो किसी ने जो कुछ दिला बिगाड़ना बिगाड़े। फ्रेंड्स, this is perhaps one of the most important elections we have ever seen. We have seen 14 years, 14 साल इस टोरी हुकूमत को हो गए हैं। आप मुझे बताएं, कभी ऐसी गुर्बत आपने देखी है? Have we seen the level of poverty that we are seeing today? Have we seen the cost of afford? मैं सच्ची आपको ये बात बता रहा हूं. People are struggling to
to put food on their table. The use of food banks continues to increase on a daily basis. Let's look at the state of our hospitals. The lack of funding. आज किसी को सीरियस कोई बीमारी है उसको महीने पर इंतजार करना पड़ रहा है. When's the last time somebody managed to get a GP appointment on the same day? People can't get dentists. ये हालात है. This is a general election. And the outcome is going to be twofold. We will either get a Tory government or a Labour government. And we need to send a very clear message to this Tory government. We are fed up of 14 years that they have devastated our communities in Bradford. And on the 4th of July, we will repay them with interest in the ballot box. Finally, I want to thank all of you again. ये कैंपेन आपकी कैंपेन है. इमरान हुसैन तो एक बंदा है, आपकी आवाज है. ये कैंपेन आपकी कैंपेन है. This is about our next generation. बड़ी मुश्किलों से हमारे बुजुर्गों ने डेकेड्स लगाकर मिलों में काम शुरू किया. करते करते आज हम यहां तक पहुंचे हैं. और आज जो हमारी मजबूत आवाजें हैं, आपका फर्ज है इस मजबूत आवाज को वापस भेजें पार्लियामेंट में बड़ी अक्सरियत से. And I will remain. I finish again with this. Imran Hussain, I've been asked to say a few words about Kashmir. I will do. I've campaigned on both Palestine and Kashmir my whole life, Kashmiri Saab. My whole life. I don't need social media clicks on this issue. I've campaigned on this my whole life. And I will continue to. And the Kashmiris, the reality is, as I said in Parliament, Kashmiri Saab, not too long ago, is this. The revocation of Article 370 and 35A, whilst the Supreme Court of India might say that that is not illegal, I made a clear point which we stand by, which is it is contrary to international law. We don't accept that, and we will not rest until the sons and daughters of Kashmir have their birthright to self-determination. Good night. My brothers are here. My Rohingya brothers and sisters have faced decades-long persecution at the hands of the Burmese government. I have been vocal for you, brother, before this. I will continue to be. The 1 million brothers and sisters who currently sit in the Cox's Bazar, we send them a message through your phone. Solidarity to you. We are always with you. We will continue to be with you, and we will fight for justice for you. Friends, time not permitting, thank you very much. And I finish with this. Imran Hussain is from the people of Bradford, and the people of Bradford are from Imran Hussain. I will always be your voice against injustice at home and abroad. Thank you very much. Solidarity. Imran Hussain! Imran Hussain! Zindabad! Imran Hussain! Zindabad! That was brilliant speech by Imran Hussain. उर्दू में उसका तर्जमा बता दूं. We are supporting Imran Hussain because of his bravery. We are supporting Imran Hussain because he is our voice of Bradford. That's why we are supporting Imran Hussain. So carry on supporting Imran Hussain. Yes. ये लोग पूछते हैं क्यों इमरान हुसैन को आप सपोर्ट करते हैं. इसलिए सपोर्ट करते हैं
कि इमरान हुसैन लंदन की सड़कों पे जब हम यहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ इमरान हुसैन खड़ा होता है। यहाँ ब्रैडफोर्ड के अंदर हम एहतजाज करते हैं कश्मीरियों के लिए उनके हक में, तो वहाँ इमरान बोलता है, मुझे और कोई नजर नहीं आया। फिर क्यों नहीं इमरान हुसैन? आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि क्यों इमरान हुसैन को हम सपोर्ट करते हैं। कि खुदा की कसम पिछले 30 सालों में मैं जानता हूँ, पहला बंदा मिला है जो ब्लंटली मेरे और आपके लिए बोलता है तो इसे सपोर्ट कीजिए। 30 सालों में पहला बंदा मिला है, ना टांगे खींचे इसकी, इसे सपोर्ट कीजिए। ये हमारा लीडर बनेगा, आगे आगे मेरी और आपकी आवाज को आगे लेकर जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं। आप तमाम हजरात से भी गुजारिश करूंगा, तमाम नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, किसी ट्रैप में ना आइए, आगे बढ़िए। लंदन की सड़कों में फलस्तीन के लिए हम यहाँ से कोई चीज लेकर जाते हैं, कश्मीर के लिए हम यहाँ से लेकर जाते हैं, उसमें हमारे साथ इमरान ही होता है और कोई नहीं होता है। तो आगे बढ़िए और हमारे साथ खड़े हो जाइए, दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन for the community in Kashmir, community in Rohingya, community in Palestine as well. May Allah subhanahu wa ta'ala protect him. Ameen summa ameen. Sallallahu ta'ala ala Rasul khayr khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in bi rahmatika. Innocent Palestinians must be slaughtered before this government condemns this brutality and bloodshed. Imran Hussain, the loudest voice on Kashmir. Let me be absolutely crystal clear about this. The Kashmiris are not begging the international community. The Kashmiris... It's recorded for YouTube. Yeah. Gentleman's a big fan of your channel, isn't he? Very big. So we've come here today to support Imran Hussain. Yeah. Of course, anytime. Of course, anytime. Imran Hussain. The way to go is Imran Hussain. Everyone support him. Always support him. Keep supporting him. He's doing a lot for Bradford and he is going to keep doing a lot for Bradford. इमरान खान की जरूर सपोर्ट करो, इमरान हुसैन जरूर सपोर्ट करो, जितने भी प्लेटफॉर्म ने बंदे जी पूरी जान लाइव सपोर्ट करो। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Imran Hussain, the loudest voice on Kashmir. Let me be absolutely crystal clear about this. The Kashmiri is and for many, it is also not just our religion, but our identity which we are deeply proud of. Palestine की सबसे ऊंची आवाज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैनों भ्रो आई गए वापस घर, तो बाहर बड़ी सर्दी इसलिए पेगी। तो साढ़े बड़े प्यारे भाई इमरान हुसैन उन्होंने सपोर्ट करे जी, फुल सपोर्ट करने पे फ़लस्तीन की, गाज़ा और कश्मीर की जी उन्होंने लेबर पार्टी सी उसकी ऑलरेडी उन्हें छोड़ी दिता, रिजाइन कर सटिया ने, ठीक है ना। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बंदे, बड़े चंगे प्यार मोहब्बत वाले बंदे। तो इन्होंने सारे भैन भरा सारे सपोर्ट करे प्लीज, स्पेशली जेडे ब्रैडफोर्ड ने या बाहर जिथे नहीं थी हो जी सारे बड़े प्यारे भरा इमरान हुसैन एमपीए ब्रैडफोर्ड ने, और उन्होंने जेड़ा ऑफिस है जिसकी दफ्तर आखने अपनी जुबानी और कॉमन कम्युनिटी सेंटर इचा बाकरन रोड जी बिल्कुल सामने पॉलर पार्क जेड़ा नसा स्कूल सारा पहले उन फ्लक्स है गए उसने बिल्कुल सामने है। तो प्लीज तुसा भाई उन्हें जरूर सपोर्ट करे। भाई इमरान हुसैन एमपीए उन्हें बिल्कुल रिजाइन कर सके लेबर पार्टी की, जब उन्हें पता लगा सा कि मसलन उन्हें कोई सपोर्ट करने फलस्तीन की इन्हें फिर उन्हें रिजाइन कर सके और अपनी पूरी पूरी आवाज इच जरा ना फलस्तीन वाले की, गाजा की और कश्मीर की बहुत ज्यादा सपोर्ट कर बिल्कुल और करसन भी इंशाल्लाह। और जेडे जेडे प्रॉब्लम में इथे यूके विच डॉक्टरों ने हॉस्पिटल इंश्योरेंस सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर कर दूं। आज तुझे पता आज उन्होंने मैं गल बात ना कर सकिया
कि बहुत ज्यादा बिजी आज से इतनी बंदे बहुत दुनिया ज्यादा सी से जी वाकई ठीक है बहुत ना बंदे से इसनी वजह से हमारी उन्होंने मुलाकात हुई उन्होंने स्पेशल मी बुलाया था जी साड़ी वीडियो बनाए इस माने से ठीक है बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया पाई रहो क्या ने आ जी हाँ जी हाँ इसनी वजह से मैं कोई सही गल बात ना कर सकिया नेक्स्ट टाइम उन्होंने वीडियो बना सा और गल बात भी जरूर कर सा डॉक्टरों का मसला सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो अच्छा तो यास्मीन बेगम सर पे नहीं हमेशा पूछने किसकी सपोर्ट करने पे बिल्कुल जी, यास्मीन बिल्कुल। बेटी सारे बुझी कि नहीं, आपको बुझी सारे कि नहीं, जरे नो? भरा इमरान हुसैन एमपीए जी हाँ। और सपोर्ट करने पे पालस्तीन गाजा और कश्मीर की बिल्कुल जी पूरी पूरी सपोर्ट उन्होंने करने पे है तो बिल्कुल प्लीज जी, सारे बिल्कुल। पे ना भरा बुजुर्ग बच्चे जितने भी हो भाई इमरान हुसैन की जरूर सपोर्ट करे प्लीज और इन्होंने जेरी बाकी फैमिली जेरे भरा है इन्होंने माशाल्लाह ओए बहुत चंगे अल्हम्दुलिल्लाह सोलिसिटर है सारे जी और भाई अमजद और जेरे सोलिसिटर है अल्ताफ और उनकी पूरी सपोर्ट करे बिल्कुल और जी, पूरी फैमिली इन्होंने माशाल्लाह बहुत चंगी और एजुकेटेड है माशाल्लाह और जेडे भाई अमजद होरे भाई इमरान ने भाई जी ਉਹ ਸੈਲੀਸੀਟਰ ਹੈ जी सोलिसिटर है ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਨੇ जी अल्ताफ सोलिसिटर्स है जी हाँ। जी तो सारे भैन भरा बुजुर्ग बच्चे ने बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया अस अपने दिलों शुक्रिया अदा करें सारे ना और फिर आने के भाई इमरान हुसैन की जरूर सपोर्ट करें बिल्कुल जी, क्योंकि बिल्कुल। बहुत ज्यादा सपोर्ट करने पे सारे की माशाल्लाह फलस्तीन गाजा और कश्मीर ਬਿਲਕੁਲ की ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ और बड़े प्यारे भरा भैन भरा सा की मिलेगी आज किलिंग और रोड पर बिल्कुल मैं गई सी शॉप पर तो इन्हें के पाई मिले से पाई जाहिद और पाई कमरान ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਈ ਜ਼ੈਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ BD5 ਵਿੱਚ जी ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸ਼ ਇੰਨਾ ਇਥਾ ਹੋਣੇ ਗੁਜਰਾਤ जी और इथाने BD5 इतना होने जी यूके BD5 और पाकिस्तान होने गुजरात जी। जाहिद और उन्होंने बेटे कामरान जी। बहुत मेहरबानी जी बहुत पूरी शुक्रिया। फैमिली ने बहुत शुक्रिया और सर बड़े प्यारे भरा मिले से हसन और उन्होंने वाइफ सर प्यारी भैन और नाल प्यारियां बच्चियां सियां बिल्कुल फ्रॉम लीड्स बिल्कुल जी ਭਾਈ ਸਨੋਰ ਆਏ ਸੇ ਜੀ ਲੀਡ ਸੋਂ जी ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ जी माशाल्लाह ਖਲੀ ਤਾਂ जी ਭਾਈ ਸੰਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ सारी ਪੂਰੀ sister फैमिली ने। ने जी ਤੇ ਪਾਕਿस्ताਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਾਈ पाकिस्तान ने जेलम इथाने लीड्स है ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣੇ ਜੀ ਜੇਲਮ जी। ਤੇ ਇੱਥਾ ਹੋਣੇ ਲੀਡਸ जी, ਬਹੁਤ जी, ਮਿਹਰਬਾਨੀ मेहरबानी, बहुत ਪੂਰੀ शुक्रिया। ਫੈमिली ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ और अब आमर मिले से सकी कोसा से ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਮਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੀ ਬਾਕਰਨ ਰੋਡ ਕੋਸਾ ਸ਼ਾਪ जी ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੇ चिकन चिप्स बर्गर कहते ने चिकन चिप्स कहते ने कम से कोई 100 पाउंड ना पटिया जी इतने बर्गर आमर भाई की इतने चिकन चिप्स तो बर्गर खाने हो हैं जी आमर भाई और होने जी बाकन रोड पाकिस्तान होने जी इतना मिशका बाकन रोड होने तो पाकिस्तान होने जी गुजर खान जी जितने भी गुजर खान ने बंदे जी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया और आमर भाई रानी पूरी फैमिली की सारी तरफ बहुत सलाम वालेकुम और इससे कोई पाई मिले से वेकफील्ड सोने से ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਮਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਡੈਡ ਕਾਫੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਬਣਾਓ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬਣਾਈ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੇ बैटरी डेड हो गई सी मोबाइल असली उठा अंदर चार्ज कर ही नहीं सके इस वास्ते क्योंकि बाहर सी ना जेरा जलसा बाहर पावर सा जी जेरा पावर बैंक सा ना वो असली आसन खराब है उसी और इस वास्ते नाल नहीं खड़ी सके तो फिर उठा जेरा बाहर जलसा सी ना इस वास्ते बाहर से पता फिर प्लग शिफ्ट कौन से ना बिल्कुल जी बिल्कुल तो सारे बड़े प्यारे भाई आए से वैकफील्ड सो इमरान ने सपोर्ट करने वास्ते मिगी नाम ना को नहीं दसिया मिगी याद भी को नहीं दी ना पूछने नहीं तो वैकफील्ड सो आए से इमरान ने सपोर्ट करने वास्ते इमरान भाई इमरान हुसैन भाई इमरान हुसैन MP ब्रैडफोर्ड एमपी जी उन्होंने सपोर्ट करने था ऐसे बंदे वैकफील्ड सो जी। जितने भी वैकफील्ड ने बंदे जी सनी बहुत मेहरबानी तो बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी ब्रैडफोर्ड ने बंदे सही मिले अंकल मनशा भाई जफर सारे जी तो सनी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया सारे फैमिलियां माशाल्लाह सारे सारे भरा जेरे ना तो भैना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे बहुत चंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो प्लीज सारी रिक्वेस्ट है भाई इमरान हुसैन की जरूर सपोर्ट करे क्योंकि अपनी आवाज उठाने पे फलस्तीन वास्ते गाजा कश्मीर वास्ते तो सारे भैन भरा इन्होंने जरूर सपोर्ट करे और इन्होंने जेरे भरा है भाई अमजद जेरे अल्ताफ सोलिसिटर्स कम करे ना अपना दफ्तर है माशाल्लाह और बहुत चंगे सोलिसिटर है माशाल्लाह माशाल्लाह तो अल्लाह पाक सारे की कामयाब करे और आसान आज तुसा की इजाजत करने आज ने वीडियो इतनी है बिल्कुल जी 2 3 4 हो गए तुसी पता मैं वीडियो बनाई कोनी आज तबीयत ठीक नहीं बड़ा बीमार है आज ही मेरी तबीयत कोई आखो सही है 100% तो नहीं लेकिन मैं इस मारे गया चलना कि भाई इमरान और मी बुलाया सी तो मैं जा सा मैं
तो सारे भैन भरा बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक सबसक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें, अपनी दुआओं में जी याद रखे और सपोर्ट भी जरूर करें हैं जी। अगर कोई गलती होगी तो माफ भी जरूर करें और वीडियो पूरी एंड तक जरूर तके, वीडियो एंड तक जरूर तके। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, प्यारा कश्मीर जिंदाबाद, प्यारे पाकिस्तान जिंदाबाद, प्यारे कश्मीर जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।